फिर आज कोर्ट भी निकाल के आएगा क्या मैं तो कोर्ट डाल गया था कोर्ट निकाल के आएगा के बारे में है ना नहीं वैसे बता रहा हूँ मैं ग्रेवाल साहब ने कहा था टाई मैच करना है ना अमृतसर के बारे में सर अमृतसर ये क्या कर रहे हो आप सर हाथ नहीं हाथ तो ठीक है ये ऐसे ऐसे नहीं करना कंफर्टेबल आराम से सर अमृतसर is one of the important place in the state of Punjab. It is considered as the Golden Temple, place of the highest place of worship of the Sikhs. Plus, it also has the other historical monuments of great importance, such as Jallianwala Bagh, the border, the Waghat-Patari border, plus the Ram Tirth temple, such other things. So it was established by Shri Guru Ramdas Ji in 1577, and he constructed the Pool of Nectar in 1577. It was called as Ramdaspur. Thereafter, it was changed to the Amritsar, meaning the Holy Pool of Nectar. very good why you are nervous comfortable हो जाओ very good doing perfectly all right ठीक है आराम से करो ओके आपने लिखा ASR अगर इसकी जगह अमृतसर लिखते तो कितना ज्यादा टाइम लगता था टाइम कितना टाइम बचाया आपने वही पूछ रहे हैं हमें भी कहीं ऐसा हो सकता है कि टाइम बचाना हो तो हम भी करेंगे ना कोशिश फिर कितना टाइम बचा आपका ये ASR लिख अच्छा कल भी शायद आपको बताया था कि फादर के नाम के आगे श्री या सरदार कुछ लिखना है मदर के आगे श्रीमती या मिसेज लिखना है आज फिर नहीं लिखा आपने पुराना फॉर्म यूज कल वाला यूज कर लिया ये चला के नीचे से नहीं कल वाला नहीं है कल वाला नहीं है कल वाला क्या है दोबारा से नहीं आई टेल यू कल वाला मंगाओ आप इसका फॉर्म कल वाले फॉर्म में जो इनकी सिस्टर थी ना नहीं सर ये अलग है सर वो अलग है वो डिफरेंट है ब्रदर सिस्टर अलग से ये अलग है हमारे स्टूडेंट ये आपके स्टूडेंट है ये असिस्टेंट लीगल ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पंजाब आपकी सिस्टर भी है ना नहीं सर वो अलग वो डिफरेंट है सर वो डिफरेंट कैंडिडेट है अच्छा वो अलग कैंडिडेट है अलग जगह अच्छा जी सर जी चलो अब आपने लिखा है एक आई possess all the qualities that a judicial officer must possess hard working patient introvert why should a judicial officer be introvert he has to interact with many people Sir, as per the job profile of a judicial officer, he is not supposed to have much social interactions. Looking into the introvert doesn't mean social interaction Sir, introvert means a person who does not talk. who does not open up He does not much interact with the other people. that means I was not a good judge I am interacting with you all Sir, interaction up to the level which is required as per your job profile, not as in interacting much. What was your topic of dissertation in LLM? Sir, I prepared a topic on surrogacy laws. What? Laws of surrogacy Laws of surrogacy. prevailing in India. फंडामेंटल ड्यूटीज कब इंट्रोड्यूस की गई कॉन्स्टिट्यूशन में Sir, it was with the 42nd amendment 1976 what is the retracted confession So when a person confesses a particular fact and thereafter he alleges the contrary to what he has stated earlier, that is called as retracted confession. this section of CPC deals with public nuisance Sir, section 92 deals with the public nuisance. थोड़ा सा आगे चले गए 91. Sir, I have not revised. 91 what does it say Sir, it says in case a person who creates nuisance or disturbs public peace
then in such a case, the petition could be filed in front of the civil court, and a relevant decree would be passed. In a particular matter, you have a remedy available before a civil court and also by way of a civil writ petition, right? Yes. Where should you approach, the civil court or the high court? Sir, as per my knowledge and according to the current trends, the High Court has always been of the view that whenever you have a appropriate remedy at a lower level, that must be exhausted initially. So, if in any case a person files it under the writ petition, the High Court would be of the view to that a petitioner must withdraw a case and file it before the appropriate lower forum. So, in my opinion, it would be a civil court. A writ petition is maintainable only where no other equally efficacious remedy is available. You can file a writ where no other remedy is available to you. Right? यूसीसी के बारे में बताइए, आपको क्या विचार है? Sir, in my opinion, the framers of the constitution were really inclined to include it in the constitution. That is why they included in Article 44, that is fundamental duties. But somehow it was also clear that the fact of divergence of views and the conflict of religions, it was Should it be really. brought in now or no? Sir, in my opinion, is that it should be implemented. Uh, if I would talk about the effects of a religion and the personal rights and the customs of the particular religion, that must not be disturbed, that must be taken care of while implementing. So, UCC basically talks about the uniform rules of marriage, adoption, inheritance, succession. So, there must be uniformity in those laws throughout the country. How to bring that uniformity when we have a number of religions, number of castes, number of ceremonies, number of. This is basically related to a fact that uh, the the, int- the people should be much intellectual to understand the fact that they are not in any way harming their religion. It is not derogatory to their religion. Plus, the What is alternate dispute resolution mechanism? sir, it says, as the name suggests, that you resolve the issue in alternate to the conventional methods of the civil code. Section 89 of the CPC also talks about the alternate dispute resolution. Apart from that, Arbitration and Conciliation Act also provides for the same. Arbitration, conciliation, and Mediation, plus the Lok Adalats, which are provided under Legal Service Authority Act. Constitution also says something about this. Sorry, sir, I cannot. Constitution में भी है मेरे ख्याल PDPS में. Yes, sir, to resolve disputes at the. Anyway, Yes, who does the investigation? As Sir. per CRPC, कौन investigation कर सकता है? Sir, the police officer. Only the police officer, any other person can also be. Sir, if any other officer who is authorized by the judicial magistrate under the. Whether any designated person or the police officer can further do the investigation. Yes, sir, in certain cases, the investigating officer can also authorize the subordinate to investigate a case. Preventive detention and preventive arrest, both are same thing. Sorry, sir. So, under preventive detention, a person is detained for a time period under his own house or in his own building in order for the time being. Where it is provided. Sir, only Article 22 talks about the preventive detention under the Constitution. What is the difference between arrest and custody? Sir, in arrest, the person is actually under the control of the police officer who arrests him, and under the custody, he is not mechanically arrested. He's just under the control of the investigating officer. Both you are saying same investigating officer and the police. You just change the word. Sir, custody precedes arrest. Custody can be criminal only or it can be civil also. Sorry, sir. What is evidence?
Sir, evidence. Sir, proof. Sir, evidence leads to a proof. When you have a certain facts which corroborates or which leads to establishing a fact in the category of a proved under the Evidence Act, so that can be considered as an The evidence. term evidence is defined under Indian Evidence Act. Yes, sir. It includes physical as well as mental facts according to the definition given by the Bentham. It could be physical facts as well as the mental facts which could be Is the perceived by the definition simple. of the fact or of the evidence? Ma'am, Whether res judicata applies on operator dicta? No, ma'am. Sure. Ma'am, these are merely the observations of the court, and these are the matters which are considered as the laterally and incidentally in issue. So the res judicata do not. Under what circumstances the foreign judgment is not conclusive? Section 13 of the CPC, 13 and 14 of the CPC talks about the foreign judgments. It lays down the certain criteria in which the conclusiveness of the foreign judgments is considered. So, if they are not in conformity with the provisions, they are not conclusive, such as they are in the ignorance of the Indian law, they are in violation of the principles of natural justice, then the opposite party is not given opportunity of being heard, or such other examples. What do you mean by Manji system? Manji, And who introduced that in Sikhism? Sorry, sir. Okay. Then tell me the name of all the Sikh gurus from first to 10. 10 to first group. 10 to first. Sir Guru Gobind Singh Ji, Shri Guru Tegh Bahadur Ji, Shri Har Krishan Sahib, Shri Har Rai Ji, Shri Guru Arjan Dev Ji, Har Gobind Sahib Ji, Shri Guru Arjan Dev Ji, Shri Guru Ramdas Ji, Shri Guru Amar Das Ji, and Shri Guru second Sir Angad Dev Ji and Shri Guru Nanak Dev Ji. And who is the 11th Guru? Sir, we under the Sikhism we do not have the 11th Guru. Guru Granth Sahib Ji is considered as the final Guru. Guru मान्यो ग्रंथ. Sir, we सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ. आप कहते हैं मानते नहीं गुरु. no, sir, we do not designate as the 11th Guru actually. Guru Granth Sahib you call it? No? Sir, Hanji sir, bilkul. That's a final Guru, but we do not consider it under the chronology as the 10 Gurus. We only have 10 Gurus. बस ही. अच्छा एक तो आप ऐसे बैठो जैसे बैठे हो ना और इधर देखो जरा उसमें. Now comment upon your sitting posture. Comfortable fingers के movement हल्की सी करो. Comment on your sitting posture. So I'm a bit nervous, so that is why I'm a bit inclined to. कल बैठस है आपका. आज का मुझे देख के नर्वस हो गए. हैं? Hanji sir. आज मुझे देख के नर्वस हो गए. You're not nervous. नहीं कल नहीं था. शाम को था अपन. गिरवाल सर काफी क्वेश्चन को भी अच्छे आंसर कर रहे थे कल गिरवाल सर भी. Sir, कल feedback भी नहीं मिला, तो that is why I also wanted कि कल कैसा था और आज का. बेटर था ना इससे. इतने नर्वस कंफ्यूज नहीं. इतने नर्वस क्यों हुआ आज? क्या हुआ? कल तभी तो कल बेटर थे काफी आराम से दे रहे थे आंसर. नहीं मैं कैमरे से देख रहा था और कॉन्फिडेंट भी लग रहे थे. He must be expecting a different panel today. ऐसा नहीं है. देखो तीन अलग है. मैं बीच में मैं ही बैठा हूँ ना. ज्यादा ग्रिलिंग तो मैं ही कर रहा हूँ ना. I don't think so. You should not. नहीं आप ये बताइए हमें कि आप नर्वस क्यों हैं. नर्वस के कारण यह तो हो सकता है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं. Hanji sir. या आपको लगता है कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ. Sir, since I'm still on training, I do not get any time to revise from 9 to 5. So I'm trying to revise my concepts, but वो थोड़ा सा lag कर रहा है.
ये ना आपके दिमाग में जो बात बैठी है ना कि मैं कर नहीं रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ, ये गलत है। हाँ। जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट भी यही था जहां अब है, सारी दुनिया भी वहीं थी जहां अब है, लेकिन तेंजिंग से पहले कोई चढ़ नहीं पाया। क्यों? सर वो माइंडसेट सर। यस, तेंजिंग ने कहा कि आई कैन डू इट एंड ही डिड इट, राइट। दशरथ मांझी का नाम सुना आपने? दशरथ मांझी की वाइफ इसलिए डेथ हो गई कि वो उसको टाइम से हॉस्पिटल नहीं ले जा सका, क्योंकि रास्ते में एक पहाड़ था तो घूम के क्रॉस लेके जाना पड़ता था। ठीक है, ही सिंगल हैंडेडली कट दैट रॉक डाउन एंड carved out a road from across the mountain, है ना। तो फिर ये कहाँ है कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको टाइम नहीं मिलता? टाइम तो निकालना पड़ता है, ऐसे थोड़ी मिलता है टाइम। और ये लिख के आप मेंस क्लियर करके तो पहुंचे। और क्या सब कुछ पढ़ाई हुआ है कैसे लग गया वो उसमें डाउटफुल, खुद ही डाउट आप क्वेश्चन खुद ही डाउट कर रहे हो अपने ऊपर आप। हिस्ट्री कल्चर में सब पता है लॉ में सारे सवालों के आंसर कर दो, नर्वस क्यों है? मैंने कहा ना अगर 40% क्वेश्चन भी कर रहे हो मोरल सेंस से बहुत बड़ी नर्वस होके अपने नहीं, आप ये मत सोच के जाओ कि मेरे को पता नहीं है। क्यों नहीं पता आपको? आपने मेंस कैसे क्लियर कर लिया जब पता नहीं था आपको? फिल्म्स कैसे क्लियर कर लिया जब पता नहीं था आपको? ठीक है सर। ब्राइट स्टूडेंट टॉपर ऑफ जीएन दिमाग में बैठ गई ना बात, मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं तो ट्रेनिंग कर रहा हूँ, टाइम कम मिलता है मेरे को। ठीक है सर। पक्का होगा। वो 1.25 लाख से एक लगा हूँ तब गोविंद सिंह नाम कहा हूँ, उस परंपरा से आप आते हो और आप कहते हैं मैं, मुझे तो लगता है कि मेरी तैयारी नहीं है। नहीं सर वो थोड़ा सा था। ये याद करा करो, जय शिवा पर मोही है, पर लड़ मत पड़ना वहाँ इंटरव्यू वालों से। Sir, apart from sitting posture, any other suggestions you? सिटिंग पोस्चर, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस पे तो बता रहे हैं आपको। आप लोग हेड नोट करते हैं, आप जो sitting- ऐसे ऐसे कर रहे हो निकाल, जो सिटिंग थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे। हाँ, ये हाथ भी ऐसे आप हाथ ऐसे आगे कर रहे हो, फिर पीछे कभी जा ऐसे कर रहे हो, ये सारे ना आपके नर्वसनेस के साइंस हैं। दूसरी चीज जब एक इंटरव्यू का आंसर कर रहे हो तो बाकियों को भी देखना है, सिर्फ एक को ही नहीं देखना। जिसने आप क्या कर रहे हो, जिससे क्वेश्चन पूछा उसी की तरफ देखना, बाकियों को भी देखना बीच बीच में ऐसे ऐसे। ठीक है। नर्वसनेस इसी से खत्म होती है। सिटिंग पोस्चर कंफर्टेबल होना चाहिए, फोर्स मत करो, ठीक है। इजी कर दो। और नर्वसनेस को भी नहीं नहीं नहीं, एक और बात है जी, इनके तो फादर भी एडवोकेट हैं, है ना। कल क्वेश्चन ये तो आपको नर्वस होने का कोई कारण ही नहीं है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन ना कोई हो जाए सर वो। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को छोड़िए आप, आपके फादर तो चाहते हैं ना कि आप जज बनो, ठीक है। शाम को घर जाते हो? हैं? हाँ जी सर। मिलते हैं? अभी ट्रेनिंग में नहीं, घर जाते हो कि नहीं शाम को? अच्छा, वीकेंड पे जाते होंगे हैं? हाँ। जब वीकेंड पे आप घर जाते हो, फादर साहब से रिक्वेस्ट करो कि आप मेरे इंटरव्यू लीजिए और उसको वीडियोग्राफ करिए इंटरव्यू को। ठीक है सर। ठीक है, वीडियोग्राफ करने के बाद आपके फादर भी उसको पंक्चुएट करेंगे, बताएंगे कहाँ कहाँ कमियां नजर आई उनको, आप खुद भी देखेंगे और उन कमियों पे आप काम करिए। ठीक है सर। There is no reason that you can't improve. राइट सर। ठीक है, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस ही बिल्ड करना है, बाकी पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है। पढ़ना तो सही है, आप कहीं है ना, पढ़ना ही बंद कर दो, लेकिन कॉन्फिडेंस ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर। है ना। आपकी जेब में 10 रुपए तो हैं, लेकिन उनको खर्च करने का हौसला नहीं है। ठीक है सर। वो हौसला पैदा करना है। राइट सर। और जब हौसला हो ना, 10 रुपए की बजाय 15 की चीज ले आता है आदमी। ठीक है जी। ठीक है, सो वी होप के कल जब दोबारा आओगे, यू आर ए डिफरेंट किरणवीर ना, करणबीर। ठीक है सर। ठीक है, फ्लाइंग कलर। थैंक यू सर। ठीक है।